chemistry, C3, chemistry, everywhere motherfuckers you'll see chemistry, lyricalize enterprise and the chemistry team with Eastern Connect from the CLP chemistry. Mon message court est clair à cause de chemistry sont pour ou pas, de chapping à Irish, qu'est-ce que tu peux faire? Today we will discuss about the topic steady state approximation. First of all, हम definition में देख लेते हैं what is steady state approximation. Steady state approximation से पहले हम intermediate को discuss करते हैं. What is intermediate? Intermediate basically is species होती है which neither one of the reactant nor the product but transiting exists during the course of the reaction. Temporary state इसको हम बोल सकते हैं. Whenever a reaction involves one or more intermediate, concentration of one of the intermediate remain constant at some stage of the reaction. Thus, the system has reached a steady state. Concentration of one of the intermediate varies with the time. It means at the start and end of the reaction, and log of it vary with time. You can see here that in the reaction, with respect to time, it goes to 0. It means if you plot a graph between these steady state approximation understanding, then intermediate can be approximated at a steady state. You can see here in the graphical representation, log t and simple t. This is the first intermediate. It stands for the first intermediate and time. Now, what is when a reaction mechanism has the several steps and comparable rates? The rate determined step is not obvious, and you can see that there is an intermediate in some of the steps, and the steady state approximation implies that you select the intermediate in the reaction mechanism and calculate its concentration by assuming that it is consumed as quickly as it is generated. Just like in the example you're giving here, how the steady state approximation method work. In this example, use the steady state approximation to derive the rate law for this reaction. Nitrogen pentoxide dissociates into nitrogen dioxide in the oxygen, assuming it follows the following three-step mechanism: N2O5, Kf forward and the backward. First of all, nitrogen dioxide, nitrogen trioxide are formed. In step 2, nitrogen di and tri meet together to form the nitrogen oxide, nitric oxide, and oxygen, and nitrogen trioxide and NO then again form the NO2. It means K1, K2, and K3. K are basically intermediate between final step. In this step, NO and NO3 are intermediate. The type of production rate of NO is equal to K2, NO3, and NO2, and consumption rate of NO is K3, NO3, and NO. These are the reactants. A steady state approximation makes use of assumption that the rate of production of an intermediate is equal to the rate of a consumption. Thus, we have solving for NO gives the result. You can calculate NO calculation by dividing the equation, and the rest of the equation will become for the other intermediate NO3, and then production rate of NO3 will be Kf and 2O5. यहाँ से आप कंजप्शन रेट ऑफ नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड का फाइंड आउट कर सकते हैं तीनों को कंबाइन करके 2, 3 and Kb बैकवर्ड डायरेक्शन. अब यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं स्टेडी स्टेट assumption. What is steady state assumption? The rate of a final step N2O5 be equal to the 3 steps 2, 3 and B. ठीक है, तो यहाँ से आप NO3 की जो है वो फाइंड आउट कर लें रेट. आप रिव्यू कर रहे हैं कि 3 इक्वेशंस जो हैं स्टेप्स में जो है इन द मैकेनिज्म. फर्स्ट जो है इक्विलिब्रियम में है, देन कैन नॉट गिव अ रेट एक्सप्रेशन. सेकंड लीड जो है प्रोडक्शन ऑफ सम प्रोडक्ट एंड एक्टिव स्पीशीज ऑफ NO कॉज फर्दर रिएक्शन इन द स्टेप जो कि थर्ड है. तो ये कंसिडरेशन जो है वो बेसिकली रेट एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करती है फॉर्म स्टेप नंबर 2. Step number 2 क्या है? D for the oxygen with respect to the time, K2, NO3 and NO2, trioxide and nitrogen dioxide. Substitute करें क्वेश्चन नंबर 1 in 2 and then 3 जो है वो modified हो जाएगी. The modified equation will be K in nitrogen pentoxide. जो आपकी K है वो K1 K2 divided by Kb plus 2K. 2 को हमने 1K से रिप्रेजेंट कर लिया. तो दिस इज अ डिफरेंशियल रेट लॉ कि इसमें हम एग्री करते हैं कि जो आपका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है वो बेसिकली मैनिपुलेशन योरसेल्फ ऑन द पीस ऑफ अ पेपर. इट मींस कि सिंपली जो आपकी रीडिंग है वो अबव सॉलिड लर्निंग स्टेप से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. इसके अलावा हम एक और एग्जांपल भी जो यहाँ डिस्कस कर सकते हैं. हियर इज
फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, दोनों गैसियस फॉर्म में, और हाइड्रोजन आयोडाइड भी गैसियस फॉर्म में. व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड दैट, व्हाट इज द सीनरी, यानी हम एक मैकेनिज्म देख रहे हैं जो खुद से और जो एक्चुअली हो रहा होता है, देयर इज अ क्वाइट डिफरेंट सीन. अंडरस्टैंड? What's the mechanism might be approached? You can see driver rate law from the proposed mechanism. Just the solution, which question doesn't have a simple answer. It means that you have to be way proof that many other factors, validity, bringing of the reaction, you can say that mechanism जो है वो हम understanding कर रहे, we can't predict the rates, we can't predict the steps, and also the key values. Directly it's not. And the rate law from the proposed mechanism, first of all, you have to be considered express the rate of correction in terms of concentration change. What is the concentration change? And concentration change, you can see here, look the reaction again to see it expression and rate expression. हम propose कर लेते हैं एक mechanism. In order to propose a mechanism, we apply the following reason. Since the bonding between the iodine and iodine is weak, we expect iodine to dissociate into atoms or radicals, and these radicals are active and they react with the hydrogen to produce the product. Thus the product has 3-step mechanism. कौन से first, second and third में क्या है, iodine dissociate into a simple atomic iodine, 2 iodine combine together to again iodine, hydrogen and iodine combine together with the HI. Okay, K1, K2, K3. Which step would be used to write the differential rate law? First of all, आप consider कर लो step number 2 जो कि real product देता है. We expect you to recognize the step 3, hence the rate law to be just like rate K3 H2 and I का scale. ये हमें कह लें कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन से एक्सपोनेंशियल टर्म्स में हमने रेट इक्वेशन ड्रॉ की है. प्रॉपर रेट लॉ जो है इंटरमीडिएट है आई और नॉट अ रेक्टेन. दैट्स व्हाई यू हैव टू एक्सप्रेस द आई और आई स्केल इन टर्म्स ऑफ अ कंसंट्रेशन ऑफ अ रेक्टेन. इसके अलावा हम यहाँ पर स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करते हैं एंड राइट डाउन करते हैं डिफरेंट रिलेशनशिप. एक्चुअली बच्चों ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन कोई फिनोमेना नहीं है या कोई साइंटिफिक टर्म्स नहीं है. इट्स बेसिकली यूज इन द इक्वेशन. मतलब इक्वेशन को जो है वो हम जब डिफरेंट इक्वेशंस को स्टडी कर रहे होते हैं, जस्ट लाइक हम चेन रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं, साइड रिएक्शन कर रहे हैं, कन्वेक्टिव रिएक्शन कर रहे हैं, अपोजिंग रिएक्शन कर रहे हैं, उसमें ये टर्म्स यूज होती थी. तो जहाँ ये यूज हो रही होती है वो बेसिकली डिफरेंट रिएक्शन के मैकेनिज्म में यूज हो रही होती हैं. तो दैट्स में हम यहाँ एग्जांपल दे रहे हैं. What is the rate of production of iodine 2K1I2? First जो आपका है rate of consumption of iodine 2K2I2 plus 2K3. It means 2 reactions हैं जो कि basically consume हो रहा है. तो आपका total producing rate of the first and consumption of the rate of I जो है वो equal होता है. तो यहाँ पर आपका जो सब्स्टिट्यूट कर लें आप I2 को इंटू द रेट एक्सपेक्शन, तो आपके पास वैल्यू जो है वो रेट K3H2 K1I2 एंड K2 प्लस K3H2 विल बी इक्वल. अब यहाँ डिस्कस कर लें कि स्टेप 3 इज लो देन K3 एंड K2 इज ग्रेटर देन K3H2 एंड आपका जो रेट लॉ है वो रिड्यूस हो जाता है K इंटू H2I2. बाकी जो के हैं वो हमने प्रीवियसली क्वेश्चन की तरह K को कॉन्स्टेंट कर लिया, K1 3 डिवाइडेड बाई 2. ये बेसिकली जो है वो हमने कंट्रोवर्सी को रिमूव करने के लिए किया कि हम सिंपल रेट कांस्टेंट जो सारे को एक कंबाइंड के का नेम दे दिया है. अब आपका जो रेट लॉ है वो फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू द बोथ रिएक्शंस एंड वन मे आर्ग्यू दैट द रेट लॉ आल्सो सपोर्ट्स अ वन स्टेप मैकेनिज्म. एलिमेंट्री स्टेप जो है वो सेम होता है एज द ओवरऑल रिएक्शन. सपोज कर लें कि वी यूज अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन एज कंपेयर टू आयोडीन, देन चेंज इन हाइड्रोजन जो है वो इनसिग्निफिकेंट होगी. फॉर एग्जांपल इफ हाइड्रोजन जो है वो 10 है, आयोडीन की कंसंट्रेशन 0.1 है. इनिशियली हाइड्रोजन जो है वो इसेंशियली 10 to 9.9 इट मीन सिग्निफिकेंट फिगर में हम इसको ले रहे हैं. हाइड्रोजन हार्डली चेंजेस व्हेन द रिएक्शन एंड्स. तो K3 एंड हाइड्रोजन की जो वैल्यू होगी ग्रेटर देन K3 होगी और रेट जो होगा वो इक्वल टू K1 I2 के बराबर होगा. इट मीन्स
कौन सा कंट्रीब्यूशन रिएक्टेंट का ज़्यादा है, कौन सा कम है। तो रिएक्शन जो है सोडो फर्स्ट ऑर्डर होगा। सोडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो होते हैं जिसमें वन जो रिएक्टेंट है हम उसको नहीं लेते, बल्कि हाफ ऑफ रिएक्शन की जो होती है वो कंट्रीब्यूशन होती है। तो रिजल्ट जो है बेसिकली इसमें हम सजेस्ट करते हैं कि थर्ड स्टेप जो है वो फास्ट है ड्यू टू लार्ज क्वान्टिटी ऑफ हाइड्रोजन एंड देन आई, एंड यानी फर्स्ट स्टेप थर्ड स्टेप जो है वो बेसिकली फास्ट है देन द फर्स्ट वन, और जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप भी है। इट मीन्स 3 स्टेप्स में से कोई भी स्टेप जो है वो रेट डिटर्मिनिंग हो सकता है, जरूरी नहीं है वो फर्स्ट हो सेकेंड हो, डिपेंड अपॉन द contributions. Understand the lecture? And question of today is that give any example of the steady state approximation from the outside the lecture, जो आप अपनी कॉमन लाइफ में जो है वो दे सकते हैं। इट मीन जो आपने सिलेबस कवर किया हुआ है, सिलेबस कवर किया हुआ मीन चेन रिएक्शन, कंसेक्यूटिव रिएक्शन, जो रिएक्शन आपने पढ़ी हैं उनमें आप मुझे उसकी जो एग्जाम्पल दें। ओके, थैंक यू वेरी मच।